वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। वीडियो में हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म की करेंगे। आपको वीडियो पसंद आएगा, आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिए। यहाँ पर हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कर रहे हैं, विच इज दैट इफ एफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स is equal to x j omega by definition, then Fourier transform of time shifted sequence by t naught amount equal to e raised to the power j omega naught का t naught x j omega. So that is the property. Now we are going to perform proof of that. That the Fourier transform of x time shifted signal that is equal to, by definition we can write xt minus t naught, the सिग्नल जिसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, बाय डेफिनेशन ये लिख सकते हैं। ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स with the time shift. Now here we are having t minus, can write t minus t naught, let it be a dummy variable t, and we are going to take the derivative because t naught is constant, so we can take dt equal to dp. Now for that we can further write the Fourier transform of x with the time shift t naught is given by, now the above equation can be modified by putting the value t minus t naught is equal to p and e raised to the power minus j omega. Now what is the value of t? From that we can have the value of t equal to t naught plus p. We can write t naught plus p and dt is equal to dp. Now further we can take e raised to the power minus j omega t naught common, and out of the bracket then we can take out of the integration, then we can write that x is a function of t. Now the left term is e raised to the power minus j omega t, integration with respect to dp. Now this term the Fourier transform of x j omega, and multiply the term by term will come as it is. So you can say that this is the Fourier transform. अगर हम टाइम शिफ्ट कर रहे हैं कि सिग्नल को, सो हम इस तरह से उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कर सकते हैं. नाउ दस we can have the magnitude of this term e raised to the power minus j omega t naught x j omega, because this is exponential term, so we can have the magnitude of this term equal to this one. Now if I am going to calculate the phase of the term that e raised to the power minus j omega t x j, अगर हम इसका फेज कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आने वाला है, इट इज फेज ऑफ ई रेज द पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट प्लस द फेज ऑफ एक्स द फंक्शन ऑफ j omega.
the phase of this will be equal to minus omega t naught and plus the phase of x. So the result of the time shift by t naught is multiplying the Fourier transform by e raised to the power minus j omega t naught, and there is no change in the magnitude spectrum, but introducing a linear phase shift into the phase spectrum that you can see from this. A time shift results in a phase shift in the Fourier transform. Each frequency component is shifted in phase by an amount of minus omega t naught. तो जो हमारे पास जो ये फेज शिफ्ट आया, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए फेज शिफ्ट इनटू द फेज स्पेक्ट्रम। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।